जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ लाइव एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 327th एपिसोड ऑफ मार्केट एनालिसिस, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लान फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स for the coming week, because this week is going to be a pivotal one because of a lot of factors which I will discuss shortly. So welcome. Good evening. Good evening. I hope you had a great locked down weekend, especially people who are staying in Maharashtra. Why do you start so late, come early? Good question. Good evening. Good evening. All right. So let us start these sessions. So, what happened on Friday? Now, this coming week is a truncated week. We have holiday on 14th, which is Wednesday, right? So, we will have four trading sessions, and I can see we also have a holiday next week on 21st, and then we have the last week for the weekly expiry. So, this week we are going to have four trading days. Next week we are going to have four trading days. So, it's a holiday truncated week, and whenever we have a holiday in between, then trading becomes slightly difficult because of big gap up or gap down opening the following day. So no issues, we will discuss everything because we make our trading plan in such a way that holidays do not impact us much, right? So let us first start with global market. So what happened on Friday? We had I would say mixed global cues. As you can see, US markets traded positively. S&P 500 has finally reached to the most crucial level, that is 4120, right? So we are over here. We have on the S&P 500, we have now tested the 1.618 fib extension of the COVID crash, which happened in last year 2020. So Dow Jones is again very close to 34,000. Right now it is at 33,800. In last training we discussed that Dow Jones should move towards 34,000. So and S&P 500 should move towards 4120. So both these targets, or you can say both these technical targets on the higher side, are almost getting completed. So US markets traded positively, whereas the European markets, they were flattish, I would say, and emerging market index, which is of prime importance to us because India is an emerging market and we have to follow this index rather than what is happening in the Dow Jones. So as we have been saying since last 3 months, you can see in January, around January, late January or in early Feb, we made a top in the emerging market index ETF, and I track this ETF very closely. So this was the level where we said that market should undergo distribution. निफ्टी पे हमने एक टारगेट दिया था कि 15,470 से लेके 15,770, these areas, these zone should be the top out zone, and from here we should start the decline, and this is what has happened. Nifty could not even manage to trade above 15,470, right? So it started the decline from the lower range itself. And at the same time, what happened? Emerging market index made a slight new high of the recent, or you can say last 2008 crisis. This was the high that was made, and we made a fresh new all-time high. And then, since then, we have been declining. Now, this particular behavior is called a swing fail pattern, and we train on how to trade these things in our training. Now similar behavior was observed over here just at the start of 2018. Before 2018, you can see we almost had a similar kind of a market for the past 2 years. From 2016 to 2018, it was almost a 18-month doubling of the market. As you can see, we were trading just under 27 $28, and from there we almost went towards 52. So that was almost a
80 to 90% rally. And again from 30, again we managed to shoot towards 58. Again, similar behavior was observed. Right now, let's go back in history and see what has happened whenever we saw such kind of a move. Over here, post 2008 crisis, we saw a stupendous rise again of similar magnitude, where that time markets were very oversold, and that time we witnessed a bigger rally. But what follows after such a huge rally, that is something which I have analyzed in the January itself, first week of January. आई थिंक 4 Jan का जो वीकली एनालिसिस वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हो, वहां पे मैंने इन एडवांस सारी फोरकास्ट करके बता दी आपको कि क्यों मार्केट 70 to 80% डिक्लाइन करता है whenever you have a doubling of the index in less than 1 year. And I have explained that not on any whims and fantasies or my personal opinion, but based on the data which itself has worked on Nifty in the past 20 years, or you can say on Sensex in the past 30 to 35 years. So I will strongly recommend that you go and watch that video of 4th of January. And there itself, all the predictions, all the forecasting has already been done. Now, this ETF has been sluggish and it has been moving down of late. Uh, थोड़ा रैली इसमें देखने को मिला था लास्ट एक दो दिनों में, बट ऑन द डेली चार्ट इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, एंड इट हैज not sustained. As you can see, it is in a clear downtrend, and this downtrend is going to persist. Why? Because US dollar, king dollar, we call it as a king dollar because king dollar is very bullish. And in fact, not to boost, but all of you, all the regular followers, they know that every move in the US dollar was forecasted in advance. Right from January first week, we said US dollar should initiate the first move. This move will be sold off. We will make a slight new bottom. From there, the actual rally will come. How many people remember this sort of analysis? Right from here, we started the rally, and again, we are taking support. मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि यूएस डॉलर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, इसको रीटेस्ट कर सकता है, एंड फ्रॉम हियर अगेन वी शुड start to move higher, thereby completing the first installment of the reversal that has taken place after a super decline of entire 2020. Correct? Now, every move in US dollar was predicted. That was pretty easy to do. And the implication for emerging markets was very much related to the movement in the US dollar. Okay, so I try to analyze from an intermarket perspective. It is not on a standalone basis that I analyze. That is why our forecasting ability is very robust in nature. Things can go haywire for few days, but then eventually they align to our thought process. Why? Because we do not look Nifty, Bank Nifty, and stocks on a standalone basis. Rather than we look at the global markets as a one complete market, and how India is placed vis-a-vis the other markets, right? How particular sector is placed vis-a-vis other sectors globally. तो जैसे metals में हमने आपको कहा था कि इनको गलती से भी शॉर्ट मत करना. If you cannot play on the long side, do not short JSW, Jindal Steel, Tata Steel, and all these stocks, right? Everybody is witnessed the stupendous rise in metal index. So let us move ahead. So, what is happening in global markets is something, I would say, a catch up rally. Okay, a catch up rally, as in not the catch up rally, the catch up rally. So, the catch up rally, US market were the last market to start this rally. Why? Because, as I have explained earlier, जब से Donald Trump has left the office from say 21st of January, US markets were not performing at all. They were pretty much flat. And just few days back, as you can see, I think this is around 10-15 days back. This is the 21st Jan high. This is the 27th or 25th March low. And recently we have started to perform, right? So the catch up play was pending in the US market, and that has started to happen. That is still happening. From here, I expect US market to do two things. Number one, either it can end up into a melt up rally. Now, what is a melt up rally? Dow Jones particularly peak out in a melt up phase. So, what is a melt up phase, guys? See, whenever there is a late surge that starts in these indices, they tend to overshoot. Look at the slope, it becomes little parabolic in nature. They tend to overshoot,
and then there is a nasty collapse. Okay, this was seen in 2018, right? Then again it went to make a new high. Again a late rally started in 2018, ended up into a melt up phase. Again a nasty drop. Again same behavior happened in 2019. We witnessed a parabolic rise, or you can say a melt up phase. Again we witnessed a corona crash. Now same thing, if you can look at the chart, if you can look it on a daily chart, you will see it more clearly. So two things are going to happen. Number one, either we start to decline in a small corrective manner, or it will do the repeat of this and this. Okay, so whatever the case is, now US market, even if it ends up into a melt up phase, that's a pre-warning, that's a precursor of a eventual crash coming into the market. So we will not participate in that suckers rally. Exactly, one of my student has nailed it correctly, right? So we are not going to be a sucker in this suckers rally. Instead, what you can do is, suppose you are long in the US market, suppose it starts to break more higher, what you can do is you can enter long trade and try to keep a precise stop loss of 2 days bottom. Okay, if you follow this approach, you will almost ride the entire melt up phase and exit automatically whenever the trend is reversing. So very few people know this method. I'm sharing it with you, that follow the 2 day bottom stop loss strategy. 2 दिन का जो bottom होता है वो stop loss आप trail करते जाइए, and दिस इज हाउ यू कैन मैनेज टू राइट नाउ। ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप किसी भी इस टाइप के स्टॉक में भी फॉलो कर सकते हो जो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, पैराबोलिक तरीके से मूव करता है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू राइड अ ट्रेंड। All right. Now, what else is happening? If I look at the euro, because euro is very important. So euro is again, it has bounced up. थोड़ा technical एक pullback आया है, but again it will take some resistance and again it will start to fall. GBP USD forex market में British pound जो है ये भी आप देख सकते हो कि UK इंडेक्स यानी यूके इक्विटी मार्केट जो है ये एक बुलिश मूव शुरू किया है, तो जो करेंसी है ये थोड़ा और नीचे जाएगा। यानी जीबीपी आईएनआर पे वी आर हेवीली बेरिश, वी आर बेरिश ऑन जीबीपी आईएनआर, वी आर बेरिश ऑन यूरो आईएनआर, एंड नाउ वी विल बी बेरिश ऑन जेपीवाई आईएनआर। सो फॉरेक्स में जो अपने तीनों क्रॉस करेंसी पेयर्स है वी आर बेरिश, बट हाउ टू ट्रेड दिस फॉरेक्स, if time permits I will tell you guys little later on, because now the current texture in the forex market is something very different, so it will not be easy to play. Okay, now let me come back very quickly to our own nifty. So what is happening on nifty? फ्राइडे को हमने क्या लेवल दिया था दोस्तों? फ्राइडे के दिन के लिए हमने क्या लेवल्स दिए थे? फ्राइडे के दिन हमने ये कहा था कि 14,965 विच इज द थर्सडेज हाई, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट बेरिश होगा, और पहला टारगेट था 14,786, 14,786, करेक्ट? सो निफ्टी it almost opened near the 14,800 mark, then staged a pullback, and entire day it kept on falling like this. Okay, so Friday के दिन कुछ खास activity नहीं हुई है, it was more of a sideways, you can say. Now what is the forecast for coming week? So for the coming week we will have to first look how the weekly charts are placed. So if I remove everything from my chart and just put a plain simple candlestick chart, to my members, to our students in the Telegram group, on Wednesday or on Thursday itself, I had said that market will fall. Okay, market will fall. Why? Because this market lacks the conviction and confidence to take out the highs of 15,000, right? So that was set in advance. We were highly bearish on the bank nifty, and we have been shorting bank nifty since many weeks, and it has given us lot of points, lot of profits. Now why I said even if market goes up it will create a failure? Experience. This is where experience comes into play. Now you see this was a inside bar, correct? This was a inside bar. अगर आप पिछले 3 हफ्तों का यानी ये जो वीक है इनको आप देखोगे तो ये इनसाइड बार था. Okay, now whenever you have an inside bar, two things are going to happen. Number one, if we break above the highs it should be bullish, right? So that is why I had said 14,960 के ऊपर जाएगा तो ये मार्केट बुलिश होगा.
But because there is a trend line resistance coming over here, it's a channelized market as of now, it will most likely give a failure. कहा था कि नहीं कहा था? इसके ऊपर जाके ये जो है फेलियर में कन्वर्ट होगा और यहां से एक ड्रॉप आपको नीचे देखने को मिलेगी. एंड if we get a weekly closing in this manner, it will be considered as a breakout failure of the inside bar at a resistance, which should translate into a decline in the coming week. So this is why this is the exactly chart that I had drawn and shared with the students. So this was one thing. Second thing, if you look at the previous declines, if you look at the previous decline which happened a few weeks back, this was again a triangular pattern. Again, first decline, then second rise, again third decline, and again this was a triangular pattern like this. So again, we should decline. So for the coming week, I will not be surprised if we are again going to make a one more new low, okay, around 14,200 or 14,000, whichever level comes at the lower channel. So the funda, the analysis is absolutely very clear. Just by looking at this weekly candlestick, you can make out the analysis. What is going to be the direction of the market. Okay, so what is the mob level? Okay, so what is the mob level for Nifty? See, it's very simple. On a weekly basis, till we do not cross this high, right? Till we do not cross this high, there is no question of being a bull, right? So above this only, we will turn bullish till this level of say 14,960 or roughly you can say 15,000, lump sum 15,000 आप पकड़ सकते हो कि जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं जाते. लास्ट टाइम भी हमने 3 कैंडल साइडवेज किया था और उसके बाद हमने 2 वीक डिक्लाइन किया था. इस बार भी 3 कैंडल का फंडा है. So many a times, these things become very repetitive in nature. It is up to you how you observe. So till we are not crossing above this high, we are bearish in this market, and we will expect targets of say 14,500, 14,200 and 14,000. Okay, so we will keep those targets and let us see how market starts to break, how market pans out. Every day we come live at around 10, 10, 10, and that time we do the analysis for the next day. So there will be a follow-up analysis from my side. And with this, let me come to the levels. Now, what are the other things that I am observing right now? See, based on the pitchfork charts and the price and time cycle charts, what I believe is this market, if it doesn't tank right now, it can continue to trade in a in some sort of a triangle, in some sort of a triangle also within the actual channel. So this should be the broader channel. Okay, this should be the broader channel. All right, and we may continue to trade inside this triangle for few days. Okay, so till we are not breaking, this will remain a possibility. And we have two critical events coming ahead. After the April expiry, we have the West Bengal result. Now that result is going to be a very, very crucial one. So two things will happen. Number one, either this market, when is the West Bengal election? As you can see, this is where the terminal point of this triangle and the confluence with the channel comes. So it is not a coincidence, right? So this is how markets behave. News will come and technicals will be ready to act on that news. All right. So if we continue to move in this triangle, trading in April will be difficult, particularly Nifty. Uh, एंड स्टॉक्स विल बी इजियर, बट निफ्टी ट्रेडिंग काफी डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आपके सामने ये रेंज काफी छोटा हो जाएगा. एंड एज वी मूव फर्दर द रेंज विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. सो either two things are going to happen. We go sideways and converge just around the April expiry and just before the West Bengal election based on the result. Okay, it can be either a big pop or it can be a big crash like this. This is scenario number one. Scenario number two, suppose we do not move till the end and in between we fall just before the event, just before the expiry, around the expiry, but just before the West Bengal result, right? If we fall like this,
then there can be a possibility that we have corrected just before the result. And suppose if BJP comes with a big majority, market may, just make a pop like this, and that can be the full and final top of this market. Okay, so there are a couple of scenarios which are going to happen. We are ready with every scenario. We have all the charts in place. We draw all our charts in advance. So we have, 4, 5, 6, 7, 8 type of charts. So जो भी बाजार करता है, हम उसमें से फिल्टर आउट कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन मार्केट में आउटप्ले हो रही है. दिस इज व्हाई वी आर नेवर सरप्राइज्ड इन द मार्केट. दैट्स आवर स्ट्रेंथ कि हम सारी सिनेरियोज के चार्ट्स पहले से ही बना के रखते हैं. ठीक है. सो और क्या बातें हैं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा. और क्या बातें यहाँ पे सी, और ये बातें हैं फिलहाल कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो द प्री कोविड हाइज. Now just try to understand the distortion in the index. जो लोग इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, जो लोग इंडेक्स मैनेजमेंट को आंखों के सामने देखना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू. बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड below the COVID high or pre-COVID high or 2020 whatever you want to call it. Okay, so बैंक निफ्टी यहाँ पे है और इसका साथ ही निफ्टी यहाँ पे है, तो मीन रिवर्जन होगा. अब या तो बैंक निफ्टी को भाई ऊपर आना होगा या तो निफ्टी को नीचे जाना होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन तक जो है सेपरेट नहीं रह सकते. देयर हैज टू बी कन्वर्जेंस व्हेनेवर देयर इज अ डाइवर्जेंस. सो सपोज इफ बैंक निफ्टी इज नॉट विलिंग टू कम अप, यानी बैंक निफ्टी जो है टेक्निकल बाउंस वगैरह देता है 1000-2000 पॉइंट का, बट इट इज नॉट कमिंग अप इन अ ट्रू सेंस, देन व्हाट विल हैपन? दिस विल हैव टू कम डाउन. Correct? So that is why next 2 weeks are very crucial, because if Bank Nifty is not responding, Bank Nifty is not staging a good rally, that will be a hint that Nifty will follow this corrective structure, whether it is triangle, whether it is channel, whatever it is. But the path of least resistance is on the downside. Okay, and suppose if Nifty falls and Bank Nifty does not fall incrementally later on, that will mean that in next round Bank Nifty will outperform, Nifty will remain downside. So this is how you gauge what is going to happen and who will lead, who will lag. Okay, चलिए अब आते हैं सीधे लेवल्स पे. So what are the trading levels for Nifty on a weekly basis? What are the trading levels for Nifty on a weekly basis? See, weekly mob level जो होगा दोस्तों, वो मैं रखना पसंद करूंगा इस कैंडल का हाई, और I would say simply 15,000, just a ballpark figure. So the weekly make or break level, the weekly mob level on Nifty spot, I would say अगर मैं एकदम प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये होना चाहिए आपका लगभग 14,960. ओके, 14,960, दैट शुड बी द लेवल. अबाउट दिस वी विल स्टार्ट टू टर्न बुलिश, बट कॉशियसली बुलिश रहेंगे. कॉशियसली बुलिश रहेंगे क्यों? क्योंकि आई एम वेरी गुड इन ट्रेडिंग फेलियर्स. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी फेलियर सेटअप होने वाला होता है तो मुझे पहले ही समझ में आ जाता है. दैट इज माई स्पेशलिटी. हर ट्रेडर का कुछ एक स्पेशलिटी होता है. So if that channel is intact, market क्या करेगा? Again ये इसके ऊपर जाएगा and fail कर देगा. So this is how I come to know कि कौन सा चार्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि सारे सिनेरियोज में अपने मन में लेके चलता हूँ. So if channel is intact, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, try to understand. If this channel is intact, right, and there is a horizontal breakout happening, मार्केट को कौन मूव कराता है? मैं और आप तो मूव नहीं कराते, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वही मूव कराते हैं. रिटेल ट्रेडर कभी भी डोमिनेंट प्लेयर नहीं होता है, राइट? सो इफ देयर इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस जस्ट 150 पॉइंट्स अबव, कोई भी इंस्टीट्यूशन इस ब्रेकआउट को क्यों बाय करेगा? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है? नहीं है, राइट? कि वो अंडर नीचे का रिस्क इतना लेके वो ऊपर के 150 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट क्यों बाय करेगा? सो इन दैट केस वो क्या करते हैं, उनको पता है कि रिटेल यहाँ पे जंप करेगा, रिटेल बाय करेगा, वो अपना माल रिटेल को चिपकाएंगे खुशी खुशी. रिटेल भी हैप्पी हो जाता है कि अब न्यू हाइज आने वाली है निफ्टी में. एंड देन you see a candle like this where there is a slight new high, right, and then there is a drop.
तो रिटेल यहाँ पे बाय करता है, रिटेल बुल ट्रैप का शिकार होता है, एंड दे देन स्टार्ट टू सेल हेविली, और आप उनके बकरे बन गए, एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल लाइक दिस, राइट। सो इसी तरीके से अगर कोई लार्जर चार्ट पैटर्न, कोई लार्जर लेवल्स अगर इंटैक्ट है, अगर वो वर्क कर रहा है, तो जो स्मॉलर पैटर्न है वो हमेशा एक फेलियर जनरेट करेगा, जहां पे लार्जर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स या डोमिनेंट ट्रेडर्स आके अटैक करते हैं, they try to fish you out. Okay, so anyways, coming back to the discussion, you will have 14,960 as the weekly make or break level. इसके ऊपर हम cautiously bullish रहेंगे, उसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहला टारगेट अपसाइड में होगा 15,120 and second target could be your 15,200। फिलहाल मैं मैक्सिमम इतना ही लेके चलना चाहता हूं। हाँ, अगर यहाँ से बड़ी अच्छी रैली वैली होती है तो हम हर दिन के एनालिसिस में इसको फॉलो अप ले लेंगे, एंड वी विल कम विद द हायर लेवल्स। ओके, 14,960 के नीचे मार्केट विल बी बेरिश, एंड आवर फर्स्ट टारगेट इज 14,660, 14,460 and then 14,292. So three targets are there on the downside, and as I've said, if markets become very bearish, तो ये जो पैटर्न है कि थोड़ा सा माइनर लो बना के बाउंस करना, तो ये एक और माइनर लो बनाएगा, which will be maybe you can say 14,110, okay, and then again it may choose to bounce, but यहाँ से बाइंग जल्दबाजी में नहीं करना है, बिकॉज आप समझो मार्केट इस चैनल में दोनों में से किसी को ट्रैप करना चाहता है, या तो मार्केट इस बायर को ट्रैप करना चाहता है, या तो मार्केट इस सेलर को ट्रैप करना चाहता है। तो अप्रैल का जो महीना है, जस्ट बिफोर द वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, somebody is going to be trapped, अंडरस्टैंडिंग। और सपोज 2-3 महीने तक अगर मार्केट एक टिपिकल एक पैटर्न ट्रेड करता है और आगे कोई इवेंट है, तो समझ जाओ कि दोनों में से कोई एक पार्टी ट्रैप हो रही है। तो इसीलिए लेटर स्टेज ऑफ दैट मोस्ट विजिबल पैटर्न में कभी भी काउंटर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो मैंने कहा उसको रिवाइंड करके 10 बार सुनिए, आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। एनीवेज, सो दैट्स द वीकली एनालिसिस। जहां तक मेरा पर्सनल फीलिंग है, मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट 15,000 के ऊपर जाने वाला है, and I still believe market will try to rotate more in this zone of, you can say, 15,000 to 14,300. I will keep a 700 points range for this week on Nifty spot. Okay, now अगर मार्केट डेफिनेटली इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है, मार्केट इसके ऊपर एक अच्छे से रिवर्सल करता है, एक गैप के थ्रू करता है, या किसी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के थ्रू करता है, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बिकम बुलिश इन दिस मार्केट। Okay, so that's our specialty. चलिए, so that's all on Nifty spot. Let me move very quickly towards Bank Nifty कि Bank Nifty में क्या हो रहा है। अच्छा, निफ्टी में कल के लेवल्स मैं दे देता हूँ। कल का लेवल अगेन आई वुड से इट्स प्रीटी इजी, बट हाँ, कल का सिनेरियो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कल के लिए 2 सिनेरियो है। नंबर 1, एक मॉब लेवल है आपका 14,780, ठीक है, दिस विच इज द फ्राइडेज बॉटम, और एक मॉब लेवल है आपका 14,960 which is your Thursday's high. So which one will you choose? Okay, which one will you choose? क्योंकि ये डायलेमा है, it's a dilemma kind of a situation. Market can trade in this overall range. If market opens gap down below the Friday's level, which certainly it will, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कल टैंक करेगा, और मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन करता है तो 14,460 का लेवल should be tested very very easily, just like this. Okay, so इस पहली को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, let me tell you. If there is a suppose bullish opening, अगर बाजार इसके नजदीक खुलता है तो हम मॉब लेवल रखेंगे 14,960, ठीक है। इन दैट केस 14,960 विल बी द मॉब लेवल। ऊपर में पहला टारगेट होगा 15,080 का, और दूसरा टारगेट होगा 15,120 का। ओके, सो यू कैन नोट डाउन 15,120 का, ये हो गया। और इसके नीचे टारगेट होगा 14,860 एंड सेकेंड टारगेट होगा 14,770, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान नंबर 1 वेरी वेरी क्लियर। प्लान नंबर 2, if there is a opening near this, if there is a gap down opening, then in that case जो mob level होगा that should be your 14,770, and first target on the downside
side will be 14,660 and second target will be 14,460. ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये जो ऊपर के लेवल्स मैंने मेंशन किए हैं 860 960 अगेन दे विल बी दी टारगेट्स. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लान आप फॉलो करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नीचे खुला तो ट्रेड प्लान नंबर 2 फॉलो करेंगे, लेवल्स यहाँ पे हैं. ऊपर खुला तो ट्रेड प्लान 1 फॉलो करेंगे, लेवल्स यहाँ पे. बहुत ही सिंपल है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. नाउ व्हाट इज द क्रूशियल थिंग फॉर टुमारो? इफ वी टेक आउट 14,460, then be very careful in this market because I don't know what will happen. Okay, levels are there to help us out. We have 14,292, 14,110, etc. But I think it can be little panicky also. So थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे. और अगर 1460 नहीं तोड़ता है तो अगेन ट्यूसडे वगैरह से, ट्यूसडे सेकेंड हाफ से वापस से ये बाउंस बैक करना शुरू कर देगा. सो दैट्स ऑल. आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग ओनली निफ्टी. लेट मी वेरी क्विकली गो towards bank nifty, but before I move towards bank nifty, let me inform you guys कि next जो trading है हमारी on technical analysis, price action and the trading setups specifically for stocks, for nifty, bank nifty, index trading कैसे करनी है, forex market को कैसे trade करना है and mcx. So this exclusive training is scheduled on April 24th and 25th. It's an online because there is lockdown, right? And all the topics and everything is mentioned. You can WhatsApp and you can get connected. Once you register, you will get access to our exclusive student telegram group for 3 months. All right, so let me move towards bank nifty. Bank nifty में क्या scenario है? Now bank nifty में, if you guys remember, we have been hitting hard and hard and hard for the bank nifty. राइट, सो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि काफी पहले से ही हम बैंक निफ्टी पे बेरिश हैं एंड एवरी डे वी आर गिविंग प्रिसाइज लेवल्स, व्यूज एंड द ट्रेजेक्टरी. नाउ इफ यू रिमेंबर, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि दोस्तों ये कैंडल काफी अच्छा है. दिस इज अ वेरी नाइस बुलिश एनगल्फिंग रिवर्सल कैंडल एट अ प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया, बट आई विल नॉट बी अ बायर हियर, आई विल कंटिन्यू टू बी अ सेलर. और उसके रीजन मैंने उस दिन के वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया था. एंड गाइस, इफ यू सी, माय एनालिसिस वाज अगेन करेक्ट. ओके, माय एनालिसिस वाज अगेन करेक्ट एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि जब तक रेजिस्टेंस ना कटे सपोर्ट की वैल्यू नहीं है. जब तक रेजिस्टेंस ना कटे सपोर्ट की वैल्यू नहीं है. गिरते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस को काटना जरूरी है. आप अगर कोविड क्रैश के टाइम पे मेरा कोई भी यूट्यूब वीडियो देखोगे तो मैंने यही बात कही थी कि प्लीज, जब तक सपोर्ट हर जगह दिखेगा दोस्त, सपोर्ट तो हर जगह दिखता है. ठीक है, जैसे सहारा आपको सब लोग देते हैं बोलने में, एक्शन में नहीं. करेक्ट, तो सपोर्ट हर लेवल पे होता है, बट कोई एक ही लेवल जाके फाइनली आपको सपोर्ट देता है. तो जब तक रेजिस्टेंस ना कटे, जब तक परेशानियां खत्म नहीं होती है, समझो कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है. Right, so that same thing helped us during COVID crash. All the videos are there on YouTube, and that same thing I am following here. Now, just to add to your learning, whenever you have a very strong uptrending market, invariably it will come down to make first low. Then if it is making a lower high and it is breaking the bottom, उसी दिन समझ जाओ कि जब तक इसके ऊपर हम नहीं आते हैं तब तक ये डाउन ट्रेंड ही है. ये अगर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस भारत की जनता सीख जाए तो नंबर 1 ये चीज होगा, आई डोंट नो हाउ मच मनी विल यू मेक और नॉट मेक, एंड दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट टू आस्क इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट. नेवर आस्क हाउ मच मनी ही और शी इज मेकिंग, बिकॉज even if he is making 1 rupee, even if he is making 100 crores, it is not going to add to your kitty. ठीक है, नॉलेज की बात करो, नॉलेज लो, और नॉलेज से जिसको कमाना है, जिसको नहीं कमाना है, वो उसका डेस्टिनी है. नाउ इफ यू फॉलो दिस मंत्रा, आई कैन चैलेंज यू, आप कभी भी किसी भी क्रैश में आप फंसोगे ही नहीं. चैलेंज कर सकता हूं. ठीक है, और इसके प्रमाण आपको हर जगह मिलेंगे. आप कोई भी इंडेक्स का चार्ट उठा के देखो कि जब एक सेक्युलर एक अपट्रेंड था और इस टाइप की स्ट्रक्चर हुई, जब तक इसके ऊपर ये नहीं आता है, स्टे शॉर्ट टिल द टारगेट्स आर कंप्लीटेड. स्टे शॉर्ट.
ये सिंपल लॉजिक मैंने यूज किया एंड आई हैव बीन अ शॉर्टर इन बैंक निफ्टी सिंस सो मेनी डेज एंड ऑल द वीडियोस आर देयर ऑन यूट्यूब. ठीक है. नाउ coming back to the bank nifty analysis, bank nifty guys has a date at this level of around 30,600. I have put on the Facebook, मैंने थर्सडे को ही डाल दिया था, थर्सडे सॉरी फ्राइडे को डाल दिया था शायद. एंड दिस इज माय टारगेट. सो बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी इस डाउन ट्रेंडिंग पिचफॉर्क में है, हम इस टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे. व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टारगेट इज बिकॉज in stock market there are always two trends going on. Okay, you say markets are bullish, market is in a bull trend, that is wrong. You say markets are bearish, market is in a bear trend, that is also wrong. Why? Because who creates a trend? It is price flow with respect to a certain time frame. Okay, it is price flow with respect to a certain time frame. So market can be bearish on say daily time frame, but it can be bullish on a weekly or a monthly time frame. और इन दोनों का जो संगम होता है, that is where the tops and bottoms are made. So in bank nifty, till we are not crossing till we are not crossing 33,600, okay, I am bearish again in bank nifty. I know all my targets are completed and it is risky to be a bear at such a sold out levels, but I will stick out my neck and say that it is still bearish. Okay, and we are going to see 30,500. So what is the invalidation point to my opinion? If we take out this gap, if you remember यहाँ पे gap था. मैं एक और चीज कहता हूँ कि मार्केट में जो भी होता है ना, उसको अपने मेमोरी में आप बिठा के रखिए, क्योंकि मार्केट को तो सारा चीज याद है बट आपको नहीं याद होता है. तो यहाँ पे जो गैप था, अगर आप देखोगे तो इस गैप के ऊपर काफी नेगोशिएशन की बात चली थी बैंक निफ्टी में. काफी दिन ये इसके आसपास नेगोशिएशन कर रहा था, बट फाइनली बेयर्स जीत गए. सो इफ till we are below this, I am bearish and my target is 30,600 minimum. If it turns into a capitulation, then God knows, then anything is possible. But फिलहाल ज़्यादा हम panic नहीं create करते. This is the target where you have a nice structure, nice support, long-term pitchfork support, and it's a very decent fib retracement. In fact, this is the minimum retracement which I look for after a meaningful rise. Okay, and it is coming closer to the 200 DMA as well. So काफी heavy confluence है यहाँ पे. यहाँ की जो gaps हैं बजट डे के बाद ये भी fill up हो रही हैं. Okay, so मोटा मोटा 33,600 के नीचे हम bearish रहेंगे और final target है हमारा 30,600, roughly 30,000 भी आप कह सकते हो अगर panic होता है तो. So let me write down the levels and move very quickly to the next segment. So weekly mob level, weekly make or break level for bank nifty spot stands at 33,600, which is this. Okay, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी जो है अपने 21 EMA और अपने 65 EMA के नीचे चल रहा है. ओके, एंड दे आर कमिंग वेरी क्लोज टू क्रिएट अ नेगेटिव क्रॉसओवर. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आप समझ रहे हो? मैं अभी से फोरकास्ट कर देता हूँ. जिस दिन ये क्रॉसओवर होगा ना, जिस दिन ये क्रॉसओवर होगा, मोस्ट लाइकली उस दिन बॉटम होगा बैंक निफ्टी का. ठीक है, सो इस व्यू को, क्योंकि ये होता है, ये मुझे पता है, तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ इस अजम्पशन को. और अगर इफ आई सी बैंक निफ्टी एट this level and if I see there is a negative crossover on the higher side, I will assume that market has bottomed. On any sign of a reversal, I will start to buy bank nifty. Okay, so anyways चलो इसको बाद में रखते हैं. फिलहाल के लिए 33,600 हमारा वीकली मॉब लेवल है, इसके नीचे हम बेरिश है. पहला टारगेट है हमारा 32,000 एंड वी हैव देन 31,650. नाउ एक और चीज मैं बताता हूँ दोस्तों, 31,650 ये जो लेवल है ना, ये स्पेशल टैबलेट है. मैं हर दिन एक स्पेशल टैबलेट देता हूँ. कल अगर मार्केट यहाँ पे आता है 31,650 पे आता है, तो एक बार के लिए शॉर्ट्स को बुक करना, एक बार के लिए शॉर्ट्स को बुक करना. अगर आपकी अच्छी प्रॉफिट आ रही है तो यहाँ पे बुक करना. ये मैंने आज ही लेवल मार्क करके रखा है बिकॉज इट कैन बाउंस बैक स्ट्रांगली फ्रॉम दिस लेवल. बाय नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट्स को बुक करना है 31,650 पे.
और फाइनल टारगेट क्या होगा? 31,000 एंड 30,600, 30,666। तो आप देखो बहुत लेवल्स है, 4 लेवल्स हैं इस तरीके से। और 33 के ऊपर जब ये बाजार जाएगा तभी मैं इसमें बुलिश होऊंगा, और पहला टारगेट रखूंगा मैं 34,500 के आसपास। फिलहाल बुलिश व्यू अभी काफी दूर है, तो उसको बाद में देखेंगे, जब होगा तब हम देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई थिंक आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 40 मिनट्स निकल गया इसी में, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ कल मार्केट मोस्टली बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, एंड बैंक निफ्टी शुड really move very badly. We also have a lowest closing on the closing basis on this chart, and we have a oversold MACD which is not willing to come up. मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि जब ऐसा सिनेरियो होता है इंडिकेटर्स पे, इट इज देन जब कैपिचुलेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कोविड के टाइम पे you had a oversold MACD not willing to cross over, already market गिर चुका था, and then the collapse happened when markets are oversold, ठीक है। सो आज के वीडियो, जो भी मेरे टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, जो भी सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, आई होप आज के वीडियो में आपको इतनी नॉलेज मिली होगी जितना हर वीडियो में मिलता है, ठीक है। ओके, एक बार कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। कल का स्पेसिफिक लेवल क्या होगा? वीकली एनालिसिस हो चुकी है, कल के स्पेसिफिक लेवल्स की बात करते हैं। तो लेट मी सी कल हम क्या असाइन करेंगे। सी वेरी सिंपल है दोस्तों, फ्राइडे का जो हाई है 32,957, यानी रफली 33,000 लिख देते हैं, ये आपका कल का मॉब लेवल होगा, ठीक है। सो 33,000 ये हमारा कल का मॉब लेवल है। इसके ऊपर 33,300 पहला टारगेट एंड 33,500 दूसरा टारगेट, ओके। एंड बिलो दिस पहला टारगेट है फ्राइडे का बॉटम विच इज 32,300 एंड देन 31,650, ठीक है, दो टारगेट्स। और 31,650 के नीचे राउंड नंबर 31,000, वेरी इजी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट मी मूव टू द अदर सेक्शन, अदर सेगमेंट। ऑल राइट, सो दोस्तों कैसा लगा आज की एनालिसिस? लेट मी नो हाउ मच important you found this analysis. See, there are many things which I can explain. बातें तो बहुत हैं, बट अक्सर समय कम पड़ जाता है। मंथली चार्ट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैंक निफ्टी मुझे दे रहा है, बट लेट अस कीप फ्यू थिंग्स फॉर लेटर, राइट? ओके, सो निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो चुकी है। प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत ही पुअर प्रोफाइल है, एंड डेफिनेटली मार्केट को नीचे जाना चाहिए, स्पेशली निफ्टी और बैंक, दोनों ही। बैंक निफ्टी की बहुत ही बेकार प्रोफाइल है, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ऊपर में मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। ऑल्सो निफ्टी फ्यूचर्स की जो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है एट अ हायर लेवल इन अ राइजिंग वेज स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी वेरी बैड, ओके। सो दिस इज वेरी बैड, एंड everything is ready for a move like this, okay। so that's all, nifty और bank nifty की analysis हो चुकी है। let me move to commodities, okay। now before I move to commodities, let me have a look at the forex market, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट forex में है एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी काफ़ी सिंपल है, ओके। सो फॉरेक्स में क्या हो रहा है देखिए। फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर का डेली चार्ट एक बार ओपन करते हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड? we have got a huge up move in the USD INR। ये बहुत ही बड़ा इवेंट था। इवेंट, I am hearing many big traders, many institutions, they were also very shocked, right, by this move। so इसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, लगभग मैंने फिगर आउट कर लिया है, बट मैं शेयर करूंगा किसी और दिन, आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सो व्हाट इज द लेवल दैट is crucial on this USD INR, okay, 75.25, okay। thank you Ajay ji for your super chat contribution। you made me realize that there exists a button called as super chat। thank you, okay। so USD INR पे 75.25, that is the level that I am watching। अगर दोस्तों USD INR 75.25 के ऊपर जाता है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके।
प्रॉब्लम इन द सेंस हो सकता है यूएसडीआईएनआर एक्सप्लोड करे, या ये भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी मेंटेन करे। ओके, अगर उसके ऊपर नहीं जाता है, if it is not crossing that barrier, then there is a decent chance that we will witness again something like this, that we had a very spike movement, then followed by a sideways sluggish down move. We had a spiky movement followed by sideways sluggish move. So same thing can happen, but this time, because it is happening for the third time, I am very cautious on USDINR. मैं इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा हूँ, एंड आई विल बी वेरी कॉशियस। और जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, प्लीज ट्राई टू प्ले विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा फॉरेक्स का। You have not seen the trending move. Whenever it comes in forex market, it takes your cloth. Okay, so be careful. So 75.25, that is the barrier. इसके नीचे अगर ये ट्रेड रहता है तो मैं ट्राई करूंगा हल्के हाथों से टेक्निकल शॉर्ट करने का, 20 पैसे 30 पैसे के लिए। एंड लेट अस सी, अगर ये क्लोजिंग कर देता है, सपोज 74.6 के नीचे कंफर्टेबल क्लोजिंग करता है, देन फॉर फ्यू डेज वी मे गेट करेक्शन लाइक दिस, क्योंकि काफी स्पाइक मूवमेंट है। सो हो सकता है हम रीटेस्ट करेंगे एक 73.8 को। तो लेवल्स क्या होंगे यूएसडी आईएनआर पे, देखिए 75.25, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर पूरा रावण राज चलेगा, पूरा बुल्स राज करेंगे। इसके नीचे बेयर्स का थोड़ा सा कुछ हो सकता है। सो डाउन साइड में 74.60, ओके, दैट इज द लेवल। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो 73.8 तक की मूव आ सकती है। अगेन आई एम सेइंग, बी वेरी वेरी कॉशियस, do not trade without stop loss, do not be leveraged, because it's a high beta move which we have entered. You can see the volumes, and please be very careful. हो सकता है ये नीचे क्लोज करके अगले दिन ह्यूज गैप अप मार दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके, बी रेडी फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज। नाउ यूएसडी आईएनआर तो ठीक है, अगर यूएसडी आईएनआर सपोज ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी और ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होता है ऊपर में, तो मेरा इंटरेस्ट है 3 पेयर्स पे, जिसमें से जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर है। ओके, सो जीबीपी पे हम रोज ट्रेड करते हैं, एवरीबॉडी नोज वी आर वन ऑफ द मेजर ट्रेडर्स इन जीबीपी आईएनआर। सो इसमें आप देखिए क्या सिचुएशन है कि देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग, गैप को फिल करता है और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। सो आई विल बी अ सेलर in GBP INR. It has already reached 103.25. तो ओवरऑल कहूँ तो अगर USD INR अपने 75.25 के नीचे रहता है, तभी ये शॉर्ट्स की ट्रेड वैलिड होंगे। USD INR इसके ऊपर जाता है तो फिर ये शॉर्ट्स कट हो जाएंगे, क्योंकि देन USD INR इटसेल्फ ये सारे पेयर्स को ड्राइव कर देगा ऑन दी ऊपर साइड। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा जो बैरियर है 103.25, ये लास्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट का, एंड वी विल ट्राई टू फिल अप दिस गैप नियर दी 100.8। ओके, सो ये एक रेंज होगा, बीच में छोटे छोटे टारगेट्स ही लेके चलेंगे। ओके, सो सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना है। सो फॉरेक्स मार्केट पे जीबीपी आईएनआर पे ये व्यू है, 103 से लेके 103.5 रेजिस्टेंस है, और नीचे में 102 के नीचे एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी 100.1 100.5 के लिए। जेपीवाई आईएनआर में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, बिकॉज आई बिलीव यूएसडी जेपीवाई जो है अब ये बुलिश होगा, तो वो जब बुलिश होगा तो ये बेरिश होगा। ठीक है, सो इसमें मैं आपको बता दूं लमसम कि 69 रुपीज हार्ड कोर रेजिस्टेंस होता है, एंड फ्रॉम 69 वी कैन लुक टू प्ले फॉर से 67। इस 2 रुपए के लिए हम शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हैं, इस रेंज में हम प्ले करेंगे। ठीक है, और रही बात यूरो की, तो यूरो में आपको दिख सकता है यूरो थोड़ा कठिन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल यू कैन से कंसीडर वी हैव रीच्ड टिल 89.3, सो broadly speaking we can consider say 90 as the benchmark resistance for a move towards 87। तो ये 3 रुपए में हम यूरो को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, वरना डिटेल लेवल टू लेवल तो मैं इसमें भी बता सकता हूँ, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं एक ब्रॉडर व्यू बस बता रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन दी करेंसी फ्रंट। रही बात एमसीएक्स की, तो देखो गोल्ड और सिल्वर बुलियन इंडेक्स तीनों बुलिश हैं, करेक्शन थोड़ा सा आना था, सो दैट करेक्शन हैज कम, एंड अच्छी एक थोड़ी रिट्रेसमेंट हो जाए तो आप वापस से बाय बैक कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दी एमसीएक्स एनालिसिस टुमारो। रही बात कॉपर की, क्योंकि कॉपर पे क्वेरी था, तो कॉपर पे देखो लास्ट वीक हम लॉन्ग थे,
यानी लास्ट वीक मैंने बुलिश आपको कहा था कि 660 से 700 की मूव होनी चाहिए, एंड वी वेंट टिल 697। अभी भी ये स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी भी ठीक है। एंड बट एक चीज ध्यान रहे कि इसके नीचे 680 के नीचे खेल खत्म। तो इसके नीचे हम शॉर्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक ये 680 प्रोटेक्टेड है, कॉपर एक और बार बाउंस कर सकता है 707 के लिए। ओके, सो कॉपर में मैंने आज कुछ चीजें नोटिस की हैं। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज ईदर नॉट ईदर कॉपर इज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पहला ये लेग था क्रैश का, जिसमें एक बार लोअर सर्किट हिट हुआ था, जो हमने रियल टाइम टेलीग्राम ग्रुप में कैप्चर भी किया था, ये वाला। सो कॉपर हैज स्टार्टेड इट्स लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिग बॉयज आर सेलिंग इनटू द रैलीज। सो ये पहला डिक्लाइन था। अब ये एक काउंटर बैक रैली है जो 707 तक जा सकता है। 680 नहीं टूटा तो 707 आएगा। अब 707 पे क्या होता है ना, ये हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि 707 से अगर ये डिक्लाइन करता है तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म है। सो कॉपर पे लेवल में दे चुका हूँ। नेचुरल गैस में वही ट्रेड चालू है, शॉर्ट करो बैठे रहो, इट विल गिव रिजल्ट। सो नेचुरल गैस में एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये कल गैप अप खुलता है 191 के ऊपर, 191 के ऊपर, तो ये थोड़ा वापस जा सकता है 197। सो नेचुरल गैस में जो एक रेंज है 198 से लेके 180, ये अभी यही रेंज चल रहा है, ठीक है। वंस वी start the next leg, that time we will break past 180 and then you will start to see 165, 155, 145 those levels। कमोडिटीज में दोस्तों, क्योंकि एमसीएक्स सॉरी कमोडिटीज में यानी एमसीएक्स में बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग डिफिकल्ट होगी, क्योंकि प्राइसेस अलग हो जाएंगे। क्रूड ऑयल पे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अभी कोई व्यू नहीं है। एक ही व्यू चल रहा है कि 4,500 रेजिस्टेंस है और 4,300 4,250 सपोर्ट है, बस वही व्यू है। एक शॉर्ट ट्रेड मैं ऑलरेडी इसमें शेयर कर चुका हूं पिछले 2-3 दिन पहले, एंड दैट शॉर्ट ट्रेड इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। रही बात जिंक की, तो जिंक पे अगेन बुलिश है, 234 वगैरह आ सकता है, बट फ्रेश बाइंग मत करो, ऊपर ऊपर में मत बाई करो। नीचे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ है 223 के आसपास, यहाँ बाई करो। अगर कोई भी बाइंग आप करते हो तो 220 221 का आपका लास्ट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होगा 234 का। ऊपर में मत फंसना, ठीक है। मिस हो चुका है रैली तो मिस होने दो, बट डू नॉट गेट ट्रैप्ड ऑन द हायर साइड, फाइन। तो दोस्तों एक और बार मैं अपडेट दे देता हूं कि जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, यू कैन रजिस्टर फॉर द अपकमिंग ट्रेनिंग ऑन April 24th and 25th, and then you can get added। ऑल राइट, सो क्या विचार है आपके लॉकडाउन में? महाराष्ट्र में तो पूरा लॉकडाउन होने वाला है मेरे ख्याल से। लॉकडाउन की भविष्यवाणी कर दी थी मैंने, अब मैं पछता रहा हूँ कि क्यों मैंने भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि सही साबित हो गया यार। ओके, सो आई थिंक एमसीएक्स की बात हो चुकी है, ठीक है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए भी वेट करेंगे। ऑल राइट, सो अब आते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। लेट अस सी सम स्टॉक्स। सो पहला जो क्वेरी है या लॉकडाउन में सब खाली करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट क्वेरी इज जील, जी एंटरटेनमेंट और या जील। स्टॉक्स पे बहुत क्वेरीज आने वाली हैं दोस्तों। लेट मी टेल यू कि प्लीज सेफ रहना मार्केट में। ऑलमोस्ट 2.5 महीने से मैं वार्निंग दे रहा हूं। ओके, सो जील में एज यू नो आई एम अ परमा बेयर इन जील, एंड एवरी टाइम इट ट्राइज टू गो अप, बट कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट पे है, अराउंड 200 लेवल पे सपोर्ट पे है। थोड़ा सा 212-13 तक जा सकते हैं, दैट्स इट। डेड काउंटर है बॉस, डेड काउंटर है। ओके, सो इट मे गो अप टिल आई कैन से 215 तक चलो जा सकता है, बट उसके ऊपर फिर बाद में देखना पड़ेगा। सो पुअर काउंटर। अदानी एंटरप्राइज, excellent query। Adani Enterprise. See, Adani Enterprise is obviously bullish, right? But the question is, can you trade? Right? The question is, can you
trade it? And the answer is depends on your caliber. So अडानी इंटरप्राइज में स्टॉक में अगर आप लॉन्ग हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और इस स्टेज ऑफ मार्केट में डू नॉट एंटर फ्रेश. इफ यू आर एंटरिंग, फॉलो अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 2 डे बॉटम स्टॉप लॉस, यानी 2 दिन का जो लोएस्ट लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा. बीपीटीसी. See 1260 already stock has spiked up, late movers हैं, so try to book profits, that's all I can say. See late stage जो movers होते हैं अक्सर ये वो stocks होते हैं जो could not participate in the main rally. So आप देख भी सकते हो कि अगस्त से ये stock declining में था, and all the moving averages have now converged over here. The stock is giving a technical breakout from this channel, or sorry, from this resistance. Okay, but the fate of these stocks are limited, and I don't see this stock crossing 1386. but यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाना चाहिए. ठीक है, so यहाँ तक अगर आपको मूव मिलता है तो try to book profits. मैं तो बस यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी. ओके, टीसीएस. टीसीएस पे जब गिरा था टीसीएस, तब मैंने कहा था कि इसको कैश में बाय करना. उस वक्त आई डोंट नो किसने बाय किया नहीं किया, बट नाउ इट इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स. सी यही तो मैं समझाता हूँ, जब आप लोग क्वेरीज पूछते हो तब प्रोफेशनल ट्रेडर बाहर निकलते हैं. सो टीसीएस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास है, अराउंड 3333. Good part, or the good thing about TCS currently is that the monthly chart is still bullish. Okay, so going forward it should still move higher. but क्या ये लेवल एंटर करने के लिए सही है? I don't think so. Okay, because it is very much overbought, and you should always wait for corrections to happen. Okay, so if we look at the fibs, if we look at the Fibonacci's, then clearly 3620 एक अगला टारगेट इसमें सेटअप हो रहा है. Okay, so 3620 will be the next stage target on TCS. Okay, so this is the long term pitchfork, and we have been following this pitchfork since last 1 year. करेक्ट. जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ये 2000 की ब्रेकआउट हुई थी, तब से हम इसमें बुलिश हैं. और पहला टारगेट क्या था मेरा? 2800. दैट वाज प्रिसाइसली द हाई. नेक्स्ट टारगेट क्या था? 3200. दैट वाज प्रिसाइसली द हाई. एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज 3600. ओके, बट whether you will buy here, I don't think so. It will be very risky. I am a risk averse person, so I will suggest कि जिनको फ्रेश बाइंग करना है आप वेट कीजिए, जब करेक्शन वगैरह होगा तब इसको बाय करेंगे. ठीक है, सो दैट्स द व्यू. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल अगर आपको जानना है, यानी कल के लिए, परसों के लिए शॉर्ट टर्म, तो यू हैव टू डू अ सुपर चैट. ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट टीसीएस. इन्फोसिस सेम व्यू होगा, क्योंकि इन्फोसिस ऑलरेडी रन अप कर चुका है. ऐसे इन्फोसिस ने अपना डबल टॉप ब्रेकआउट किया है. टीसीएस इज सिटिंग एट डबल टॉप, तो पीयर ग्रुप है, तो ऑब्वियसली टीसीएस भी करेगा. आज नहीं तो कल जो है टीसीएस भी करेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई दैट 3600 टारगेट ऑन टीसीएस इज स्टिल ओपन. अगर आप तेजी में हैं और आप ट्रेल करो, हो सकता है डायरेक्ट 3600 ही चला जाए, हु नोस. ओके, all right, so the next stock is what? Infosys. So Infosys, I think, has rallied enough. I would suggest try to book your profits. Do not see, again I'm giving the same warning. Do not try to lap up these stocks at a higher levels. Okay, always wait for correction. If you cannot wait for correction to happen in a market, then leave stock market. Okay, in the short term, Infosys, if I have to check the fibs, we are at a decent level. So this is actually, as per my trading style, this is where we take out the profits. This is where we take out the profits. Okay, 1.27 is always the first target.
If it is defending the previous day bottom, then you can follow that pattern for 1.6 as a target. So in this case 1500 का टारगेट है इन्फोसिस पे, पहले भी मैं 1500 ही दे चुका हूँ टारगेट। तो जो कैश के जो ट्रेडर हैं, आपके सामने एक ऑप्शन है, या तो आप ट्रेल कीजिए 1420 पे ट्रेल करो 1500 के लिए, ठीक है। जो एफएनओ के प्लेयर्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसको ट्रेल कर सकते हो, बट क्योंकि आप एफएनओ में हो, आई वुड सजेस्ट एक बार बुक कर लो, ओके। एंड अगर नीचे गिरा तो फिर हम वापस बाय बैक करेंगे। सो दैट्स द अप्रोच, आई वुड से, नॉट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, अप्रोच होता है। सो दैट्स द अप्रोच फॉर इन्फोसिस। माइंड ट्री, सी एवरीबडी इज आस्किंग आईटी स्टॉक्स, व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन एनीथिंग or it doesn't mean anything? So Mindtree, now the regular followers, आपको पता ही है Mindtree का हमारा prediction क्या था, you can see the targets, and now you know, just book profits here, nothing more I will add, because those who have started watching me recently, so Mindtree was our stock, and you can see this 1580। आप अगर लास्ट वीक February का वीडियोस देखेंगे तो उस टाइम पे ही मैंने कहा था कि Mindtree अगेन इट विल स्टार्ट अ ह्यूज रैली, राइट? सो it's a very bullish counter, it's a very bullish counter, and still, you know, lot of upsides are there, but at this stage please book profits, and whenever next time crash happens we will try to buy this stock again, okay? YouTube, yes, exactly. See, YouTube अभी आईटी पर ही वीडियोस रेकमेंड कर रहा है, यस। सो इट्स अ वार्निंग, ओके, बी a contrarian when there are suckers all around, and when there are contrarian, be a sucker। ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में जुड़ो, साइकोलॉजी क्या होती है ना मार्केट की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ओके, सो डॉक्टर रेड्डीज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 4400 4400 को जो इसने ब्रेक किया था, तो रीटेस्ट पे आपको बाय करना था, टारगेट्स ऑन द हायर साइड, सो दैट लॉजिक हैज वर्कड। सो इफ यू आर लॉन्ग इन डॉक्टर रेड्डीज, एंड आई बिलीव यू आर, two options I will give you। number one, either you play end to end, यानी पूरी जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको प्ले करेंगे। तो अब ये स्टॉप लॉस है, बाकी 4950 पहला टारगेट है जो कि अचीव हो जाएगा एक दो दिन में, एंड द फाइनल टारगेट इज 5500, राइट? सो बेसिकली वी आर प्लेइंग फॉर दिस बॉक्स। सो इफ यू हैव बॉट एट अ वेरी गुड प्राइस, देन यहाँ पे पार्शियल बुकिंग करो, अगले किसी डिक्लाइन पे वापस एक्यूमुलेट करो, एंड देन बुक एवरीथिंग एट 5500। when it comes at 5500, you can ask for a review opinion, and that time, because नेक्स्ट टाइम ये इसको भी ब्रेक करेगा, सो उस टाइम पे हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। बट इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू मी, आप बुकिंग खुद से भी कर सकते हैं, ओके? डॉक्टर रेड्डीज का मंथली चार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल। सी, ये इसको कहते हैं सिंपल एनालिसिस। यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, ये ब्रेकआउट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फॉल होता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, अगेन इट इज इन द मार्कअप फेज, तो अगेन इट विल गो हियर। एंड डॉक्टर रेड्डीज पे जो एक टारगेट यहाँ पे मैं ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दिस लाइन 6242, दिस इज द टारगेट फॉर मीडियम टर्म ऑन डॉक्टर रेड्डी। सो अगला स्टॉक है KEI, exactly, okay। So this stock is again going for a breakout, so काफी अच्छा breakout है, and I will not be surprised कि ये स्टॉक अगर बहुत बड़ी ब्रेकआउट करती है, ओके? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, फॉलो ट्रेलिंग। सो इसको जो है आप 500 पे ट्रेल कीजिए, 500 पे ट्रेल कीजिए, ओके? आई थिंक दैट इज क्वाइट वर्थ टू ट्रेल। 500 पे ट्रेल करेंगे। वोखार्ड फार्मा, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड लास्ट वेडनेसडे, इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट वेडनेसडे को इसको मैंने एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि वो कार्ड, सी ड्राइंग अभी आ जाएगा आपके सामने, ड्राइंग भी मैंने किया था, यस, सी। तो ये जो है, इस पे मैं तो ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट ये फ्राइडे को इसने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये मेरा कंसर्न है कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 476 एंड ऑल, ये अगर क्रॉस करे, ठीक है, 475 से 500 का जो स्लैब है, ये मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर ये
चलना शुरू करेगा ना, जब इस चैनल से बाहर निकलना शुरू करेगा, तब इस पे मैं बुलिश होऊंगा, बिकॉज ऐसे रेजिस्टेंस के अंदर ये कभी भी फेक ब्रेकआउट देके रिवर्स हो जाता है। नाउ फार्मा इंडेक्स मैंने चेक किया, इट इज बुलिश, फार्मा स्टॉक्स आर डूइंग गुड, सो इसको एक पीयर ग्रुप का एडवांटेज मिल रहा है। सो एज अ ट्रेडर what I would suggest is try to watch out for this area. Suppose there is a gap up opening above this area, that will automatically eliminate the channel pressure and the horizontal supply pressure. In that case, this stock will find easier to travel. So in that case, try to keep this stock and try to trail at 453 if you can. And then targets will be 520 and 540s. All these will be the targets. Okay. So I'm trying to explain. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके सुनिएगा. I'm sure आपको समझ में आ जाएगा. ICICI. Next stock is ICICI Bank. See, ICICI Bank, IndusInd Bank, all these counters are going to collapse. इस पे मैं काफी पहले से बेरिश हूँ. कोई भी सरप्राइज वाला एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पे. लुक एट द लाइन चार्ट. लुक एट द लाइन चार्ट. ठीक है, ट्रिपल बॉटम पे बैठा है. कौन सा चीज ट्रिपल बॉटम पे बैठने के बाद बुलिश हुआ है बिना ब्रेक किए? कौन सा चीज ट्रिपल बॉटम पे बुलिश हुआ है बिना ब्रेक किए? तो इसका क्या मतलब है दोस्त? इसका ये मतलब है कि ये स्टॉक सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा बच जा रहा है क्योंकि जो 550 का लेवल है ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाईज रहा है और यहां से ब्रेकआउट हुआ था. सो 549 is coming. 549 is coming, and till this stock is below 585, trend is down. See, learn to use line chart. Line chart कब यूज करना है ना, यही तो पूरा खेल है. Okay, so this is the path of least resistance on the downside. On the upside, 585 is a major barrier. Okay, it's a major barrier for this stock. Target is 549. Yes, that's all on this था. अगर इसके साथ साथ मैं एक्सिस बैंक लेता हूँ क्योंकि एक्सिस बैंक भी बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर है. अभी शाम को ही मैं चेक कर रहा था कि एक्सिस बैंक में कुछ घपला तो नहीं होने वाला है. सो एक्सिस बैंक दोस्तों पूरी तरीके से पिटा हुआ स्टॉक है एंड वेरी पुअर काउंटर. आई वोंट बी सरप्राइज टू सी 613 in this stock. Now if this stock hits 613, it will mean it will be one of the earlier stocks in the private sector space to hit the 200-day moving average. खैर इसको मैं बाद में एक्सट्रापोलेट करूंगा कि इस लॉजिक का मतलब क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए 650 एक पहला टारगेट है एंड 636 ये दूसरा टारगेट है. एक्सिस बैंक में ऊपर के स्तर पे 710 जब तक क्रॉस नहीं होता स्टॉक पे बेरिशनेस बना रहेगा. ठीक है. सो जेंसार टेक्नोलॉजी जो लास्ट टाइम आपको मैंने कहा था वही व्यू है. आई विल नॉट रिपीट. लेट मी टेक सम अदर स्टॉक. SW सोलार. ओके, व्हाट इज दिस स्टॉक SW? ओके, अगेन BSC लिस्टेड काउंटर है तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. राइट द ट्रेंड 258 पे आप ट्रेल कर सकते हैं. HDFC बैंक पे आते हैं. HDFC बैंक, कोटक बैंक, ऑल दीज आर वेरी at a crucial stage, है ना. So this stock HDFC बैंक अगर दोस्तों इसको देखते हैं तो बुरी हालत है बॉस, बुरी हालत है. और HDFC बैंक में अगर आप याद करो तो लास्ट जो वीकली एनालिसिस था, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर, बट उस टाइम भी ये हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम है और RBI हैप्पी नहीं है HDFC बैंक से. ओके, they have been prohibited from issuing new credit cards and all these things. So एक ऐसे ब्रांड कंपनी के लिए I don't know what is going on. एक ज़माने में यार येस बैंक भी एकदम ब्रांडेड ही हुआ करता था. So hope for the best, but we are having a bearish crossover of the short term moving averages. You have the 21 EMA kissing the 65 EMA. So two things can happen. Number one, या तो यहाँ से एक मेजर डेक्लाइन स्ट्रेट या तो फिर एक छोटा सा रिवर्सल. तो प्राइस एक्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो जब तक ये स्टॉक 1500 के नीचे है मैं स्टॉक पे बेरिश हूँ. ओके, मैं स्टॉक पे बेरिश हूँ
एंड गिरावट अगर कंटिन्यू हुई तो टारगेट होगा 1326, 1326 का ये टारगेट बनेगा इसमें। अगेन आप देखिए सेम स्ट्रक्चर है, आईसीआईसीआई बैंक वाला स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक वाज अ विनिंग स्टॉक यानी लीडिंग स्टॉक था, तो एचडीएफसी बैंक यहां तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। सो 1500 का लेवल याद रखिए, 1500 के नीचे जो है ट्रेंड ऑन द डाउन साइड है, डू नॉट ट्राई टू बॉटम फिश। रिवर्सल होगा तो फोन कॉल आ जाएगा अपने को, मतलब चार्ट्स पे दिख जाएगा, एंड दैट टाइम वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग। एज ऑफ नाउ आई थिंक वेरी रिस्की काउंटर, वेरी रिस्की काउंटर। ओके, सो बी सेफ, do not try to buy without a reversal। 1326 should come, बहुत हाई चांस है। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक लेते हैं फोर्टिस। लास्ट वीक मैंने अपोलो हॉस्पिटल पे डिस्कशन किया था, दैट स्टॉक रॉकेटेड। अब इस बार फोर्टिस हॉस्पिटल को देखते हैं कि इसमें क्या चक्कर है। तो स्टॉक एक स्टेडी अप ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो थोड़ा सा इस बात से कंसर्न है कि काफ़ी ओवरबॉट है, राइट, एंड एट द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो देखो प्रॉफिट बुकिंग का जगह था, कोई भी स्विंग हाई आपका ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। दिस इज द बेसिक दैट आई टीच इन अवर ट्रेनिंग, मैं यहीं से शुरू ही करता हूँ ट्रेनिंग। सो ये जो स्टॉक है प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, एंड वी विल वेट फॉर अ डीपर रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 180 फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग। अभी तो कोई व्यू नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करके आपको निकल जाना चाहिए। जुबिलियन फूड, ओके, दिस इज अ गुड क्वेरी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये मुझे स्टॉक अच्छा लगा था, हमने इस पर डिस्कशन किया था कि कैसे लॉकडाउन अगर इम्प्लीमेंट होगा तो दिस स्टॉक कैन बाउंस, बट थोड़ा एक ही कैवियट था कि यार ये चीज़ लास्ट ईयर भी हो चुका है, तो कहीं रिपीट स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी नहीं होती है शेयर मार्केट में। बट नेवर द लेस, क्या स्टॉप लॉस मैंने दिया था 2700, कि जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होता इसको आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। प्रिफर्ड बाइंग होनी चाहिए आपकी लगभग 2800 के आसपास, 100 पॉइंट का रिस्क है, एंड टारगेट इज न्यू ऑल टाइम हाई टुवर्ड्स 3300, 30 या 3300, 3350 शुड बी अ गुड टारगेट, ठीक है। एंड द गुड थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट दिस स्टॉक इज दिस, लुक एट दी ब्रेकआउट, दिस इज समथिंग वेरी नाइस। तो यानी फ्यूचर में ये मेरा ट्रेंड लाइन रेडी है, फ्यूचर में जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा आई विल ट्राई टू बाय दिस स्टॉक। It's a wonderful resistance which will turn into support in future. Whenever we see it coming on this trend line, we will try to be a buy. इन दी शॉर्ट टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2800 के आसपास बाय कर सकते हैं, 2700 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 3300 के आसपास। एक स्टॉक है सिप्ला, लेट मी टेक सिप्ला। दोस्तों चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस कुछ कमेंट कर दो, लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह मैं एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वैसे। ओके, सो सिप्ला में देखिए फैंटास्टिक मूव चल रहा है, एंड वी गॉट अ बिग कैंडल मूव, सो 904 शुड बी द टारगेट, आई थिंक कल हिट हो जाना चाहिए, एंड आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक, यानी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट राउंड के लिए भी इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। फिलहाल के लिए 910 के आसपास जो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एंड इन नेक्स्ट राउंड आई विल लाइक दिस स्टॉक, मतलब ये मुझे पसंद है। इसी लाइन पे एक स्टॉक है बायोकॉन, जो कि बिफोर द फार्मा रैली स्टार्टेड आई हैड टोल्ड यू गाइस टू बाय, कि ये जो है हम बाय कर सकते हैं, राइट, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक एनालिसिस। क्यों? क्योंकि ये अब बहुत ही अच्छा मूव देने वाला है। सो 444, 470, 506, दीज आर आवर टारगेट्स, एंड स्टेडीली दीज टारगेट शुड कम। 444 इज द गैप टारगेट, जो 2-3 महीने पुराना गैप है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। ओके, सी आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल दी क्वेरीज। वीडियो जो है दोस्तों आई थिंक काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आई विल हैव टू वाइंड अप। ऑल राइट, सो सी बजाज ऑटो एज ऑफ नाउ बेरिश है, बिकॉज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
ठीक है, एंड मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस है, सो दैट्स द इशू। सो बजाज ऑटो पे फिलहाल मैं कोई एक डिसीजन नहीं लेना चाहता। मेजर सपोर्ट देखिए प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के आसपास है, जो कि नियर 3300 3400 के आसपास है। ओके, सो नो ट्रेड, नो व्यू एज ऑफ नाउ, विल नॉट रश टू मेक एनी फोर्सफुल व्यू और ट्रेड। ओके, लेवल्स की बात कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लॉन्ग या शॉर्ट हो सकते हैं। तो इन माय व्यू, I'm still, I will wait and consider this level of say 3770 as a level to decide the trend. Okay, so ये व्यू है मेरा बजाज ऑटो पे, राइट। सो जब तक ये हॉरिजॉन्टल बैरियर नहीं क्रॉस होता, मुझे इसमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो शॉर्टर्स आप 3770 को एक ट्रेलिंग मान सकते हैं, और अगला टारगेट होना चाहिए 3325, which was the breakout area and where the 200 DMA is placed. So 3325. ओके, नेक्स्ट स्टॉक टिस्को ले चुका हूँ। टिस्को पे अभी कुछ व्यू नहीं है मेरा। 3600 का टारगेट है, बट फ्रेश बाइंग अभी नहीं मैं एडवाइस कर सकता, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड एज यू नो, आई डोंट एडवाइज पीपल टू जंप इन, क्योंकि पीपल आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड इनफ to manage the adversity which can happen at a previous all time high. So Sun Pharma very good, 660 should be the target, right? So 660 के आसपास ये स्टॉक जा रहा है, जाएगा, इसमें दम है, और very easily it can do 680 also. So good, all the best Sun Pharma जिसके पास है, very good. अच्छा सपोर्ट क्या है सन फार्मा में? 600 अब एक अच्छा बेस है, ठीक है। टाटा मोटर्स थर्सडे रात को मैंने कहा था कि ये 312-13 कटेगा तो बुलिश हम हैं, बुलिश हो जाएंगे, और उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। तो दो फॉल उसने दिया था टाटा मोटर्स ने, एंड देन थर्ड टाइम इट, एज यू कैन सी, सो इट्स बुलिश। एंड फिलहाल के लिए जो अपसाइड टारगेट है वो है 340 का, ठीक है। स्टेडी राइज है, प्रीवियस डे बॉटम्स को डिफेंड कर रहा है बंदा, यानी जब तक ये पैटर्न चलेगा इसमें तेजी बनी रहेगी। एक लेवल के तौर पे बात करूं तो अब आपका स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड में होना चाहिए 308, दैट्स इट। 308 के ऊपर दीजिए बॉस, 340 के लिए ट्रेल करते जाओ, पिछले दिन के बॉटम को ट्रेल करते जाओ। अगर पैटर्न ने साथ दिया तो हो सकता है ये जो रैली हुई ऐसा कुछ भी आपको मिल सकता है, हु नोस, ठीक है। सो दोस्तों, वन लास्ट क्वेरी, I will take one last query. That's it. Adani Total Gas, all these stocks are highly bullish, and I do not encourage people to enter at these levels. If you are long, you can use my trailing method, which I have taught today for free. Okay. So, what is the next? India Bulls Housing Finance. See, I'm bearish here. I'm bearish on India Bull Housing Finance. Okay. Please do not spam Amir Memam. Okay. डू नॉट स्पैम, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे पूरे इस जन्म के लिए। रिलायंस पे कोई व्यू नहीं है। रिलायंस देखो स्लगिश है यार। रिलायंस थर्सडे को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्लगिश है, 1920 का एक अच्छा सपोर्ट है, और अपसाइड में 2050 के ऊपर एक एक एक्चुअल मूव होगा। सो अभी स्लगिश है, एंड एक दो दिन और देखते हैं, ठीक है। बजाज कंज्यूमर, नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज कंज्यूमर। See, I think I was going to take India Bull Housing Finance. So, see, Bajaj Consumer again एक स्पाइक अप दिया है, ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स, चैनल बॉटम से ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे की है मैंने, तो यानी ये हम स्टॉक ले चुके हैं पहले बाइंग साइड में। सो ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स। आई विल टेक इंडिया बुल्स बिकॉज आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन इंडिया बुल्स हाउसिंग crash. So the point is, as all of you know, I'm a dedicated shorter in this stock since many years. So ये स्टॉक पे मैं बेरिश हूँ। जो लोग नहीं जानते मुझे, ये स्टॉक पे मैं बेरिश हूँ, और इवेंचुअली दिस शुड कोलैप्स एंड वी शुड हैव डबल डिजिट्स लेटर ऑन। राइट नाउ 190 एंड 188 टेक्निकल, ये लास्ट सपोर्ट है स्टॉक का। टेक्निकल ये लास्ट सपोर्ट है स्टॉक का। यहाँ से अगर ये स्टॉक बाउंस करता है टेक्निकल प्ले के लिए, तो ये अधिक से अधिक जा सकता है 220,
I am bearish and I will sell any rally. Okay, and I have already said इसमें बहुत इंसाइडर फिशिंग है दोस्त. मैं जब किसी कंपनी में परमा बेयर होता हूँ तो पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया हुआ होता है. तो ये कंपनी में संभल के रहना, किसी भी दिन ये कंपनी पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी, किसी भी दिन. ठीक है, जैसे DHFL वगैरह हुआ था. सो प्लीज बी केयरफुल. इफ यू आर अ लॉन्गर, प्लीज बी केयरफुल. यू स्टॉप लॉस, अवॉइड लेवरेज. दैट्स ऑल. टाटा स्टील पे क्या बोलूं, टाटा स्टील ने तो आयरन मैन जैसी रैली कर दी है. सो बाइंग क्लाइमेक्स दिखा था मुझे फेसबुक पे, मैंने अपडेट किया था थर्सडे को, एंड फ्राइडे वी सॉ अ ह्यूज फॉल. So very overbought. 950 will remain a ceiling for now. It has hit a long term top, and so कोई ट्रेड में एडवाइस नहीं करूँगा. See, I'm not a fool to advise people or to entice people or to excite people to jump in at such elevated levels so that कि जब tide turn हो तो सबको लॉस हो जाए, right? So it's better to be safe than sorry. Have patience. Market always reward patient people. SBI. Okay, so SBI 335 is a downside target, but stock काफी गिरा हुआ है. I mean, already काफी फॉल हो चुका है. सो फ्रेश शॉट इस स्तर पे, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड सम लेवल. ओके, ठीक है. तो एक चीज कर सकते हैं कि देखिए, कैश मार्केट में जब तक ये 367 को क्रॉस नहीं करता, इस पे आप शॉर्टिंग कर सकते हो. ऊपर शॉर्ट करना, नीचे नहीं. ठीक है, अभी 352 चल रहा है, मैंने कहा 367 जब तक है तब तक शॉर्टिंग कर सकते हो. तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ करोगे, इसका ये मतलब है कि कोई बाउंस आता है तो 367 को रेफरेंस यूज करके आप इसको शॉर्टिंग कर सकते हो. आपका टारगेट मैं आपको देता हूँ. पहला टारगेट है 345, दूसरा टारगेट है 335. यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दी चार्ट्स. ठीक है. रिलायंस. रिलायंस क्या है? आई हैव बॉट रिलायंस 1990. आई एम प्लानिंग टू बुक प्रॉफिट और प्लीज गिव वैल्यूएबल एडवाइस. ओके, सो रिलायंस पे ये क्वेरी है आपकी. सो रिलायंस देखो, खेल खत्म हो गया यार. रिलायंस ने बहुत यहाँ पे डॉच किया है. बेरिश क्रॉसओवर आपको फ्राइडे को दिख जाना चाहिए था. इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखो कम से कम, या ग्रुप में स्टूडेंट बन के ज्वाइन हो जाओ. तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि ये स्टॉक जो है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, इट्स अ वेरी मेसी सेटअप ओवर हियर. एंड मैंने तो इसमें एक शॉर्ट किया था, फिर मैंने निकाल भी लिया. सो अभी मैं कुछ नहीं इसमें करना चाहता. आई विल जस्ट अलाउ इट टू डू टाइम पास एंड देन विल सी. तो अगर आप एक शॉर्टर हैं तो आप जो है 1955 के नीचे जाएगा तो आप कैरी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बुकआउट कर लेना. अपसाइड में 2050 क्रॉस होगा तो ट्रेंड वापस से बुलिश हो जाएगा. कीप दैट इन माइंड. ओके, कीप दैट इन माइंड. इट इज सिटिंग एट अ लास्ट सपोर्ट बॉस, एंड 1920 आना चाहिए यार. ट्रस्ट में 1920 शुड कम. 2050 को जब तक क्रॉस नहीं करता है, 1920 शुड कम. सो दैट्स ऑल. सो आई थिंक लेट मी वाइंड अप गाइस. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है. इट्स मोर देन 1 hour 20 minutes. सो लेट अस वाइंड अप फॉर द डे. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा. जिनकी क्वेरीज मैं नहीं ले चुका हूँ, आप लोग जो है आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा. जो भी व्यूज़ हैं आपके चैनल के लिए इनपुट्स भी दे सकते हैं. एंड lastly, if anybody is interested to learn from me, you are welcome. You can join, and once you join, you will be added in my Telegram group for students. So that's all from my side. Signing off. Take care. Good night. Jai Mata Di.